Hello friends, so let's talk about cinema. So what is cinema? Cinema is a story on which we will be making a film. So where is this story coming from? ये कहानी आती कहाँ से? हम आसपास whenever we are traveling, whenever we are out, हम कोई ना कोई कहानी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. जैसे कि हमारे कुछ टॉपिक्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर. हम पिक्चरें बनाएंगे क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, ज़ीरो हंगर पे, नो पॉवर्टी पे. ये जब टॉपिक्स हमारे पास आए हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़िंदगी की वो कहानी हमारे से कनेक्ट करती होगी. या हमने किसी गरीब को सड़क पे खाने के लिए भीख मांगते देखा होगा, या हम जो अपनी डोमेस्टिक हेल्प हैं या वर्कर्स हैं अपने ऑफिस में, एनवायरनमेंट में, जब उनके बच्चों को देखते हैं कि उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही और हम अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो एक हमारे को एक प्रिविलेज है जो उनको नहीं मिली. ऐसी कई कहानियाँ, कई थॉट्स, कई कॉन्सेप्ट, कई आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं और हम सोचते हैं कि काश हमें भी फिल्म मेकिंग आती होती तो हम भी अपनी कहानी बना के सोसाइटी के आगे रखते, शोकेस करते और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम डिलीवर करते. तो सिनेमा के लिए, एक फ़िल्म प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो कहानी है. कहानी आपके पास है और बाकी सारी चीज़ें हम IMI और मैं आपका मेंटर मनमीत, आई विल बी टेकिंग यू फर्दर एंड डेवलपिंग योर कॉन्सेप्ट. बट बिफोर वी गो फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन लोग हमारी इसके अंदर सहायता करने वाले हैं, कौन कौन लोग हमारे टीम के अंदर होंगे. तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम एक कोई फिल्म बनाते हैं वो किसके लिए बनती है. हमारे अपने लिए, दर्शकों के लिए, कोई कमर्शियल एंगल के लिए. ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हम बना रहे हैं उसको पास या फेल, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, अच्छा या बुरा कौन कहने वाला है. सो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि जो भी हम बनाते हैं वो हम एक ऑडियंस के लिए बनाते हैं. हम अपनी ऑडियंस खुद चुनते हैं. हमारी ऑडियंस यूथ है, फैमिली है, सोसाइटी है, सीनियर्स हैं, कौन है, या सारे ही हैं. सो ये हमारे को बिल्कुल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो एक कंटेंट है, फिल्म है, वो कौन देखने वाला है, वो किसको पसंद आएगी और क्यों पसंद आएगी और क्यों नहीं पसंद आएगी. ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे रिजेक्ट करते हैं. इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स करोड़ों रुपए की, 100 करोड़ रुपए का बजट लगा के पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर एक हफ्ता भी नहीं चलती, बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाती है. व्हाई इज दैट रीजन? वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई योर फिल्म विल बी एक्सेप्टेड बाय योर ऑडियंस एंड व्हाई योर फिल्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय योर ऑडियंस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें ऑडियंस को समझना जरूरी है. हाउ डज एन ऑडियंस विल कोरिलेट विद योर प्रोजेक्ट? वो आपकी कहानी के साथ कैसे कनेक्ट कर रही है. सो आपकी कहानी में और ऑडियंस में एक कॉमन कनेक्ट है विच इज कॉल्ड एन इमोशन. अगर आपकी कहानी, अगर आपकी फिल्म इमोशनली ऑडियंस को कनेक्ट कर रही है, अगर आपकी फिल्म कॉमेडी है तो वो आपके ऑडियंस को अगर हंसा रही है, आपकी कहानी एक्सेप्ट होगी. अगर आपकी कहानी इमोशनल है और वो आपके ऑडियंस को रुला रही है तो वो आपकी कहानी कामयाब है. अगर आपकी कहानी ऑडियंस को छू रही है, उनके मन को, उनके थॉट को, उनके ख्यालात को, इफ़ यू आर टचिंग, इफ़ योर मैसेज इज टचिंग द सोल ऑफ द ऑडियंस, योर स्टोरी विल बी एक्सेप्टेड बाय योर ऑडियंस. You will be a successful filmmaker. Your film will be a successful project. So you need to understand what it takes. कैसे वो ऑडियंस आपकी फिल्म को, ऑडियंस के पास ऐसा क्या है? क्या ऑडियंस आज लड़के गई घर से, you had a family dispute, you went to the film और वो फिल्म आप कितनी भी अच्छी थी, आपने कहा कि नहीं मेरा मूड ठीक नहीं था तो ये पिक्चर अच्छी नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होता. जो अच्छी पिक्चर है वो आदमी का ख़राब मूड भी ठीक कर देती है. सो ऑडियंस का एक पर्सपेक्टिव है. आपकी फिल्म का इमोशन और ऑडियंस का इमोशन कनेक्ट करने का बीच में एक मीडियम है.
वो मीडियम क्या है, वो मीडियम समझना पड़ेगा। जब आप कोई भी फिल्म देखने जाते हैं तो आप अपनी दो सेंसेस यूज़ करते हैं। एक, आप अपना जो विजुअल है वो सेंस करते हैं विद योर आइज, थ्रू योर आइज। अगर वो कंटेंट अच्छा है, उसका विजुअल अच्छा है, तो ऑडियंस को वो विजुअल अच्छा ही लगेगा। दूसरा, बीजीएम, कानों से बीजीएम मिलता है, वो इमोशन को उठाता है। सो दीज आर द टू सेंसेस audience uses to communicate, to receive what emotion your film project is trying to convey to the audience. So you need to understand how do you create it, who creates it. So you need to understand that, as I said, there is one main leader who is called a director. So when you have a script, you need a director to visualize it. So what does the director do? So this we will be talking when we will doing the next video, the role of the director. So there are the four main pillars of filmmaking. One is the scriptwriter. You have to have a story. Unless you don't have a story, you can't make a film. Second is the director. So director is one who visualizes the entire content as an image and then transforms into a moving images into a film project. You need actors to act on the basis of the story written by the writer. And then finally you need a producer. Producer is like an event manager who engages everything, who aligns everything in order, in place, in time, so that the rest of the team can work smoothly. So these are the four pillars we need to have while we make a film. But we need to set them in order also. So how does the entire functioning work? We will talk about this first. So the first thing is you need a story. For a story, you need an idea. So idea is converted into a story in a script, and that script goes to the director. So I am sure you have a team of between 10 to 20 people. So you need to identify who is the better writer. So you should communicate your ideas to the writer so that he can develop a script out of it, a story out of it. So this is the first part you need to do. So once your story is ready, then you need to identify who is going to be the director of the film, who is a good leader and who has good aesthetic sense about everything, who has got more exposure towards life, who is the one who can visualize, convert that script into a visualization. So that is the director you will have in your team. And then you need actors. Actors, you can act amongst your team, or you can ask for a help from your teammates, college friends, school friends, parents, anybody in your circle. If you feel that they can act well or they are fit for a character, so you can request them to come on board and please help us in executing this project. The last element is the producer. So producer you need to who is making your daily plans, who is arranging your team meetings, who is sending you call times, who is recording everything. So these are the four main elements you need in your team. So you need to divide your team accordingly. So you need to have the best guy who can convert an idea into a script, and you need a best guy who can visualize that idea into a scene and who can communicate that story visually. I am sure I will be helping you out, mentoring you in conversion, all the technical things into a proper formatting. And then you need to identify who is the most energetic guy who can work as a producer. So besides this, you need the other elements I will be sharing. You need an art director who can create the backgrounds when you are shooting. Then you need a costume designer. Whatever the script is asking, you need to have such costumes. Then you need makeup artist who can do a little bit of makeup whenever you are shooting, or what kind of content and subject and scenes you are taking over. And you need somebody who has a good sense of music so that he can arrange free copyright music for your background support. As I said, that audience connects with the BGM. BGM is background music and your visuals. And then you need a person who is assistant for certain things, who can run around.
and then you need to form a team, and you should work as a spirit, because it is a teamwork. If you win, your team wins. It is not that director wins or actor wins or producer wins or writer wins. It is a team that wins. Identify people, give them certain responsibilities, and form up a team. So before we go further, you need to understand the best of the person in your team is your director of the project. The director is like a magician. He has to have that capability that he is engaging and arranging everything in a manner where the emotion is rightly communicated to the audience. So once we do this, once the team is formed, we are ready to move ahead with our project. And before going further, I would tell you once again that please very wisely choose your director, because going ahead, your director will be solely responsible for all the goods coming to you and for all the bads coming to you. That doesn't mean that he is the only one responsible, but yes, the basic making of the project, yes, director is responsible, but actors and other team people also put in best of their hard work and contribution in the project. I wish you all the best, and next session we will talk about the role of a director, how does the director work. So I wish you all the best, and I believe that film project you will make will leave a very impactful message on the society. I thank you for joining this session, and I look forward for an interesting session on the director's role. Thank you.